शो का नाम बस कर बस्सी, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। मेरी करियर की स्टोरी है जो 4-5 साल मैंने बनाई है, तो सुनो और जाओ। Hello and welcome to Do I Like It, a Quint production where we review anything and everything under the sun. मेरा नाम है प्रतीक लिद्धू and in this episode I'm gonna tell you Do I Like Bas Kar Bassi by Anubhav Singh Bassi. Okay, so before I start talking about the show itself, मैं तुम्हें ना थोड़ा सा एक फ्लैशबैक देना चाहता हूँ. आई थिंक इट वाज 2018 और 2019 जब बस्सी का फर्स्ट वीडियो मैंने देखा था, जो भी फर्स्ट उसका हॉस्टल नहीं, चीटिंग वाला आया था फर्स्ट वीडियो. एंड आई रियली लाइक्ड इट, काफ़ी मेरे को अच्छा लगा था. मेरे को याद है मैंने 3-4 दिन में 2-3 बार देखा था. एंड माई सिस्टर हैड कम फ्रॉम बॉम्बे एट दैट टाइम एंड I had told her कि okay, this is this new comic, he's really nice, and she obviously, just like all my recommendations, she didn't believe me and she didn't watch it. और उसी समय पे हम लोग सोचे थे कि कोई शो देखने जाते हैं, और बुक माई शो पे मेरे को बस्सी का शो मिला था एक. और ऑब्वियसली उस समय पे बिकॉज ही वॉजंट अ वेरी वेल नोन कॉमेडियन, द शो रेट्स वर प्रिटी सस्ते एंड काफ़ी अफोर्डेबल लगा. और मैंने इतना बोला अपनी बहन को कि भाई चल लो, बहुत मस्त होगा, बहुत मस्त होगा. बट शी वाज लाइक नहीं, कौन है ये, मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ एस्टैब्लिश्ड कॉमिक्स को देखती हूँ. शी इज़ अ वेरी, कन्विंसिंग हर टू वॉच समथिंग इज़ वेरी हार्ड, बिकॉज वो पूरा उसको हिस्ट्री देनी पड़ती है उस चीज़ की. तो we didn't end up going, and now there are so many times that I've tried going for a Bassi show, but either the tickets are so expensive or it's totally full. तो मैं आज तक अपनी बहन से नफरत करता हूँ इस चीज़ के लिए कि उस समय हम देखने जा सकते थे बस्सी को. So talking about बस्सी, अनुभव बस्सी का first Amazon Prime special is out. The show is called Bas Kar Bassi, and it is, if you are following comedy in India, it is a very लाइक कल्ट स्टेटस अचीव कर चुका था ऑलरेडी ये, बिकॉज इतने सालों से रिकॉर्ड हो रहा था. द शोज वर इन्फेमस फॉर गोइंग 2-3 घंटे लॉन्ग, एंड दे ऑल्सो मेंशन इट इन द शोज इंट्रो. सो द शो इज़ फाइनली आउट ऑन अमेजॉन प्राइम. थैंकफुली प्राइम पे जो डाला है उन्होंने, दैट इज़ नॉट 3 hours लॉन्ग, इट इज़ 1.5 hours or something, which anyway is more than usual specials जो होते हैं, but still it's not as big because उसमें शायद crowd work वगैरह नहीं किया. Okay, so the special is basically about Bassi's life just before entering comedy, how he used to work in law, and then how he and his friends started a restaurant. तो उसके पूरे किस्से हैं, कहानियाँ हैं काफ़ी, मतलब ओह, किस्से कहानियाँ से बाय द वे याद आया, वी हैव अ पॉडकास्ट कॉल्ड किस्से कहानियाँ, जिसका होस्ट अतर हैज़ वन द बेस्ट शो होस्ट इन द इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स. So check out that podcast. It'll be streaming on every streaming platform. Just type the Quint किस्से कहानियाँ, काफ़ी अच्छी stories हैं. हाँ, so basically in the special he talks about how he was working in the Supreme Court, and वहाँ से he was very bad at it. He was bad as a lawyer, then he worked for a startup, and पूरी उसकी कहानियाँ, and then how him and his 5 friends, which include the 2 new characters in this Bassi comedic universe, which is Chaudhary and Pandit. तो ये दोनों थे उसके 5 दोस्तों में, एंड ये 5 लोग रेस्टोरेंट शुरू करते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट बस्सी एज अ कॉमिक, ही इज़ इनहेरेंटली वेरी फनी. मतलब उसमें जो वो रूटेडनेस आती है दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद की, जो बहुत सारे कॉमेडियंस में होती है, बी इट अभिषेक उपमन्यु, राहुल दुआ, निशांत सूरी, ये सब जो नए क्रॉप ऑफ कॉमिक्स है, ऑल ऑफ देम हैव दैट रियली ऑथेंटिक एंड रियली रस्टिक एंड फनी विटी वॉइस. एंड बस्सी में भी यही चीज़ है, एंड ही इज़ वेरी फनी. मतलब वो कुछ भी बोलता है, वो बात करने का तरीका है उसका इतना फनी है, इतना विटी है कि वो अपने आप ही इट गेट्स फनी. नाउ वाइल इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, उसका एक डिसएडवांटेज बहुत सारे कॉमेडियंस को होता है, एंड आई थिंक बस्सी के केस में भी थोड़ा बहुत वो होता है, दैट व्हेन यू आर सो फनी इनहेरेंटली, योर जोक राइटिंग सफर्स अ बिट, आई फील. मेरे को लगता है वन पर्सन हु हैज़ बीन एबल टू navigate this really well is Nishant Suri, because उसका बात करने का तरीका भी अच्छा है, and even his joke writing is very evolved. But if you look at people like Rahul Dua, और 2-3 लोग हैं जो बहुत ऐसे फनी, दे आर वेरी फनी, गौरव कपूर फॉर दैट मैटर, all these people are really funny,
but the jokes that they say, वो they are not as funny as the comedian themselves, right? एंड बस्सी के केस में भी कई कई जगह, आई वोंट से हर जगह हर बारी, बट कई कई जगह पे दिस comes into play that what he's saying might not be as funny, but the way he says it, the vocal inflections that he takes, the pauses that he takes, वो उसको funny बना देते हैं. So that was one of the first things that I noticed. Obviously, the story that he is telling in this special, it takes a bit of time for you to get used to it, because starting में first 20 minutes I was like, dude, what the hell is going on? Why am I not laughing? Why am I not even connecting with the story? और मतलब मेरे को बहुत ऐसा, आई फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड कि अरे ये तो अच्छा नहीं लग रहा है यार मेरे को. बट मतलब वंस आई वॉज in that universe, once I was acclimatized to the characters of Chaudhary and Pandit and all of the friends ka gang and Bassi himself, then I think it was much easier for me to just be surrendered to this world and be like, okay, this is funny. A lot of it is very funny. सो थोड़ा सा ना, जब तुम देख रहे होगे, थोड़ा कॉशन के साथ जाना कि स्टार्टिंग से ही तुम्हें हो सकता है इतना फनी फनी ना लगे, जो कि बहुत सारे आई वुड से जाकिर खान के स्पेशल्स में होता है कि फनी लगता है स्टार्टिंग से ही, और स्टार्टिंग से ही यू आर इन्वेस्टेड इन दैट स्टोरी. बट आई डोंट थिंक इस स्पेशल में मेरे लिए ये हुआ था. ऑल्सो I would say about this special, and I don't think it is a bad thing necessarily, but this is something that I noticed, that comedy, the way I see it, a lot of it is about surprise and flip. Matlab, you set up an expectation and then turn it over its head so that that shock sort of makes you laugh, है ना? And this a lot of comedians have used very अच्छे से. But I think बस्सी का जोक राइटिंग इज सच कि वो तुम्हें इतना सरप्राइज नहीं करता. ही स्टार्ट्स विद एन absurd premise and then it just keeps going more and more towards the absurd, और वो absurd ही होता रहता है, and that sort of makes it funny, which मतलब is new for me, I would admit, because usually मैं ढूंढ रहा होता हूँ एज अ द एनालिटिकल ब्रेन दैट आई एम. मैं हमेशा सोचता हूँ कि अच्छा इसमें फ्लिप कहाँ आएगा, फ्लिप कहाँ पर आएगा, ओ अच्छा इसको ये उल्टा करेगा, इस टैग में ये रूल ऑफ थ्री लगा के दो दो से एक्सपेक्टेशन सेट करके तीसरे पे उल्टा कर देगा. बट यहाँ पे वो दो में फर्स्ट वन वॉज absurd, फिर द सेकेंड वन वॉज इवन क्रेजियर, जो सेकेंड टैग लेता है, थर्ड टैग वो इवन क्रेजियर होता है. तो वो अच्छा है. बट मतलब मेरे को कई बार वो थोड़ा लेट समझ में आ रहा था कि अच्छा मतलब वो फनी लग रहा है, बट आई वॉजंट 100% श्योर कि अच्छा वो क्यों फनी लग रहा है. इट्स नॉट लाइक अ फॉर्मुलेक थिंग दैट इज हैपनिंग. सो इट वॉज अ वेरी नाइस थिंग सीइंग बस्सी इन अ लॉन्ग फॉर्म वे, बिकॉज बहुत सारी मुझे उसकी एज अ कमेडियन स्ट्रेंथ पता चली. One of which is definitely holding on to a consistent story and building a narrative, creating a universe, जो एक छोटी सी YouTube वीडियो में शायद नहीं समझ में आता. But one of his weaknesses, मतलब weaknesses नहीं, but one of the things that I wasn't 100% convinced about was this thing कि वो absurd के होने के चक्कर में by the end it just became alienating थोड़ा सा मेरे लिए. Another thing about this special that I was really looking forward to was Abhishek Upmanyu being the director of the special, because if I'm not wrong, before COVID, yeah, during COVID, he had gone India se bahar filmmaking padne and all of that. And in general, I really like Upmanyu's comedic timing. He's just a fun person to check out जिसका content. तो मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग था देखने के लिए कि अरे वाह यार, बस्सी का स्पेशल उपमन्यु डायरेक्ट कर रहा है, इट विल बी सो कूल. बट ऑन दैट फ्रंट आई वुड से दैट इट वाज थोड़ा सा मतलब ऐसा महसा लगा मेरे को, काफ़ी यूट्यूब वीडियो वाली फील आ रही थी. देयर वाजंट एनी आर्टिस्टिक चॉइसेस दैट आई कुड नोटिस 100% जो मेरे को दिखे कि अच्छा यहाँ पे कोई विजन है. ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स आई डोंट नो इफ इट्स लाइक अ टेक्निकल थिंग और इफ इट्स लाइक अ लॉजिस्टिक इशू, बट यूजुअली क्या होता है, एक जो कॉमेडी स्पेशल होता है वो ऑब्वियसली एक बार में शूट होता है पूरा का पूरा, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कैमराज जो कॉमेडियन पे लगते हैं ताकि कोई भी एंगल मिस ना हो, अगर वो कहीं पे भी स्टेज पे आगे पीछे मूव हो, है ना. और कभी वो मुड़ता है तो पीछे भी कैमरा होता है, ऊपर भी कैमरा होता है, ऑल ऑफ दैट, एंड ऑल ऑफ दिस इज प्री प्लान्ड. सो इन अ लॉट ऑफ सीन्स व्हेन बस्सी टर्न्स बैक टू से अ डायलॉग, वो मतलब आइडियली इट देयर शुड हैव बीन अ कैमरा देयर जो उसका
POV दिखाया and there should be like an editing का play there. जैसे if you have seen specials directed by Neville Shah, who is one of my favorite comedy special directors, he does that a lot. Every time there are two characters talking to each other, there is always two cameras and वो comedian इधर face करता है तो इस कैमरे में कट होता है, left को face करता है, दूसरे कैमरे में कट हो रहा है, and there is like a visual conversation also happening between the two people. तो वो सब मुझे इस स्पेशल में थोड़ी कमी लगी उस चीज़ की जो I mean it felt a bit crude उस सेंस में. That was there, but I think overall the special was edited very well. It was pacey. It was, you know, हमेशा there was things happening. मतलब it was crafted very well. It was written well, but मुझे लगता है that I would want to see more of Abhishek Upmannyu's direction for me to, you know, really like him as a director. But obviously he's like a great comic. As far as Bassi is concerned, the guy obviously has amazing one-liners. I don't remember इस शो में से कोई अगर you know इतना memorable line मेरे को लगी होगी, but I remember laughing really hard on some of the just very absurd and very crazy lines that there were. But मुझे लगता है ऐसा जो हॉस्टल वाले स्पेशल में या चीटिंग वाले वीडियो में जो था कि OBC से OCB तक दुनिया देख ली एंड स्टफ लाइक दैट, वो अभी तक मेरे को रजिस्टर नहीं हुआ, बट आई एम श्योर देयर वर अ लॉट ऑफ देम बिकॉज बहुत सारी लाइन्स मेरे दिमाग में रजिस्टर हुई थी अलग से कि वाओ यार, व्हाट अ लाइन, व्हाट अ वेरी वेल रिटन लाइन. सो ओवरऑल इन द एंड, do I like Anubhav Singh Bassi's Bas Kar Bassi? I would say yes. It's a nice breather between all of the noise that is happening, between all of the Pathan ka noise, and now there's the budget ka noise, and pretty soon there'll be an election ki noise happening because a lot of elections are happening this year and next year, obviously the Lok Sabha election. तो उसके बीच में I think it's a nice breather. अच्छा show है, अच्छा comedian है. It's a long special. It's nothing very, you know, heavy, काफ़ी light है, बहुत मतलब बढ़िया लगा मेरे को. It's not the best, you know, comedic artistic special, but मुझे लगता भी नहीं है कि Bassi cares about it and he just wants to make people laugh, and that he does really well. So yeah, and another thing I want to mention, the song that comes in the end, the rap song. I'm not sure who the artist was. I will check it in the credits and I'll put it in the description, but I want to mention the guy because वो काफ़ी अच्छा rap था. It had a lot of references to Bassi's previous videos and मस्त था, काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को special. So you should definitely check it out. It's streaming on Amazon Prime Video. And that was the episode. You let us know if you have watched Bassi special, if you like Bassi, if you don't like Bassi, if you know you've seen the show pehle, and let me know what you want us to review next. This was Prateek, and I'll see you in the next one. Do I Like It is a Quint original podcast, executive produced by Shelly Walia and Ritu Kapoor. This episode was hosted and produced by Prateek Lidhu and edited by Anjali Palod. The episode uses audio from the special Bas Kar Bassi, and the theme music is from BMG Production Music. You were listening to the Quint's podcast.